अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग की सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है, तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है और दुनिया में हम देख रहे हैं कि इसराइल की हिमायत में मगरबी ममालिक की तरफ से बयानात आ रहे हैं, जिसमें बरतानिया की तरफ से आया है, अमेरिका की तरफ से आया है, दीगर और ममालिक की तरफ से भी आया है। इतलात हैं कि कतर की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया है, जो हॉस्टेजेस हैं, उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जा सके, दोनों जानिब यानी कि इसराइल की तरफ भी और इस तरफ भी। और इस मौजूदा सूरत हाल में जो इंटरनेशनली अब तक सूरत हाल हमें देखने को मिली है, उसमें ये लग रहा है कि जिस तरह हमला आवरों को दहशत गर्द करार देकर उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है पूरी दुनिया में कि इसराइल में मुकीम रहने वाले वहाँ के जो बाशिंदे हैं, चाहे वो यहूदी हैं या क्रिश्चियंस हैं या किसी और मुल्क से उनका ताल्लुक़ है या मज़हब से ताल्लुक़ है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे विजुअल्स भी चलाए जा रहे हैं जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि ये सरासर जुल्म है और ज़्यादती है जो कि इजराइलियों के साथ की जा रही है। आज के प्रोग्राम में मुझे हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है नायब सदर फ़लस्तीनी मिशन नादर अल्तुर्क ने। मिस्टर नादर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। And we've got Walaikum Assalam, and we've got senior analyst Qamar Cheema sahab as well, who's joined us for our show tonight. So first of all, Mr. Nader, I would like to ask you, what is the situation like back in Gaza? Because at the moment what we've heard is that the situation is still hostile and people within Gaza, families, buildings, they have been bombarded overnight, there have been aerial strikes. So what exactly is the situation back there? The situation right there, it is very sad. Israelis are become more and more crazy. They are out of their mind because they are only thinking about revenge, because their image as a superpower country in our region damaged by our freedom fighters. They try to kill more as they can kill from Palestinian civilians people. Until now, we have about 560 shaheed in Gaza Strip, more than 2,500 injured. Most of them are actually children and women and old people, because they actually attack the houses when the civilian people are still in the houses and the building, which damage the house, destroy it over the head of the people who are living there. That is the cause of getting a lot of shaheed and injured people in Gaza Strip. They damaged more than 60 buildings over the head of the people are inside. They damaged many institutes, many schools, many masjids in Gaza. They are trying to make collective punishment by stopping supply, electricity, water, gas, fuel, medicine supply, all that things stop, because Gaza under siege since more than 18 years. Everything received by our borders which is under the Israelis' control. So when they are saying stop, they actually stop everything. Nothing can be reached to Gaza. So, Mr. Nader, another question that I would like to ask you at this point in time with regards to the information which you've just given us, that Israel has blocked the supplies for medicine, for food and other essential items, including electricity as well. So is there a backup? How will civilians be coping with this situation? Is there enough supplies available, backups available for medicine and food supplies in particular? They can manage for a few days, few weeks, because they already have a good experience in how to deal with the crisis. This is not the first crisis they're facing. They face many crises since 1948 until now. In the last few years, they're facing a lot of attack by Israelis. So they can manage for a few days and few weeks. But we need to keep Israel under pressure by Muslim Ummah relations with the superpower countries who are supporting blindly Israel, by keep Israel under pressure to stop
dealing with Palestinians as non-human. One of the Israeli leaders today, he make a statement that they are not dealing with a human, they are dealing with the human animals in Gaza. This is how they are looking for the Palestinian in Gaza as animals. Actually, the Israelis looking for everyone, not a Jew, as an animal. So we need to stop end these things very soon, to end this crisis as much as we can do. Okay, so Mr. Nader, so far the world knows of the atrocities the people of Palestine have been through since 1948 and all that they've been facing throughout their lives. But now, as we speak, the international community, in particular the West, the perception that they're creating over there is as if the people living in Israel, the Jews, they're the ones who are facing, they're the ones who've been massacred, and they've been subject to this violence, these attacks from Palestine, and they've been declared as the people who've actually moved forward. The attack has been named as a terrorist attack. So how do you see this developing? Because perceptions make a lot of difference, and internationally, I'm sure you need to have support not only just from the Muslim Ummah, but from the West as well. Actually, Western countries are dealing usually with Muslim Ummah, especially with Palestinian, double standards. They are thinking that the principle of international law, principle of human rights are only selected for their own nations, not for Muslim Ummah nations and for Palestinian people. They need to change their mind, because what we are facing right now is a price of their double standards policy. What we are facing now by keeping Palestinian people and Israeli people, all our region suffering, it is a result of many things. One of it, the Israeli occupation for the Palestinian territories. The second thing of double standard by international society and Western countries. Third things, relax and freeze the international resolution which speak about justice and freedom for Palestinian people. This is the real price of their policy. So they need to change their policy, or this thing's going to be extreme, and we don't know how much huge is going to become, and how long and how where it's going to be. These people are right now without any hope, because this policy keep the horizon, political horizon blocked, without any hope of peace and stability in our region. This policies, crisis policies, need to be end to give hope for the people by getting peace and stability in the future. If this keep dealing with this policy, we don't know how much is going to be increased and where it's going to be transferred. Right. Moving forward, Mr. Nader, we've got Qamar Cheema Saab as well with us, who's a senior analyst. Qamar Cheema Saab, I'll be coming back to you shortly again, Mr. Nader, while I speak to Mr. Cheema. Cheema Saab, आप मौजूदा सूरत हाल को जो अभी वहाँ पर गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो हमेशा से होता आ रहा है, उस पर आपको कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए जी, इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि 22 सितंबर को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूएन जनरल असेंबली में जो स्पीच की, तो उसमें उन्होंने जो गजा और जो वेस्ट बैंक है उसका मैप ही खत्म कर दिया और कहा कि अब सारा के सारा इजराइली है, अब इनका कोई राइट नहीं है और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसमें प्रोवोक किया जारी बात है हमास को। एक बात, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सऊदी अरब जो है उसने एक डायलॉग शुरू किया, नॉर्मलाइजेशन शुरू की फ़लस्तीन के साथ, इजराइल के साथ, जिसकी वजह से सऊदी फरमारवा जो है MBS साहब, उन्होंने कहा कि हम हर रोज इजराइल के करीब पहुंच रहे हैं, हर रोज हम डायलॉग कर रहे हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर शायद फ़लस्तीनी ये समझते हैं कि अरब वर्ल्ड उनके बगैर ही कोई नॉर्मलाइजेशन कर रही है और इजराइल हमें दीवार से लगाने के लिए तैयार है। तो ये एक उनको जिसे कहते हैं ना मिसट्रस्ट नजर आया। पहले आपको याद है 2020 में UAE बहरीन ने इब्राहिम अकॉर्ड के जरिए इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि फॉर अ मोमेंट तब्दीली तो आ सकती है, लेकिन
विदाउट फ़लस्तीनियों की सपोर्ट के और विदाउट फ़लस्तीनियों को ऑन बोर्ड लिए दोनों तरफ जो एक्शंस हो रहे हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या फ़लस्तीनियों ने, हमास ने जो सऊदी अरब की जो आउटकम आना था इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का, उसको देखा है? नहीं देखा। उन्होंने उससे पहले ही इस को जो है वो हमला कर दिया है, जिसकी वजह से मजीद जारी बात है, अगर आप सारे अरब वर्ल्ड की अभी तक देखें, जीसीसी या अरब लीग की कोई कॉन्फ्रेंस ऐलान नहीं किया गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी उस तरह अभी तक नहीं सामने आई, छोटा मोटा कोई इजलास हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म ना तो कोई रीजनल सोल्यूशन है और ना इंटरनेशनल सोल्यूशन है। जो चीज हमारे सामने आ रही है वो ये है कि इजराइल पे हमला हो गया है और इजराइल को अपना पूरा हक है कि वो रिस्पॉन्स करे, और अब फलस्तीनियों ने देखना यह है कि क्या हमास उनके वाकई मसाइल को हल करने को तैयार है। क्या हमास, जिसने अगर 700-800 इजरायलियों को मार दिया है, इन रिटर्न आप अरबों डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अपना नुकसान करवा के हजारों फलस्तीनियों को मरवा लें, इसका क्या, ये भी एक एंगल है, क्या ये भी ठीक है? मुझे लगता है कि जो इजराइल को कंडेम करने की जरूरत है, जो उसने इजराइल के वजीर आजम ने यूएन में किया, एक बात, और दूसरा जो अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन है उसके रिजल्ट को देखा जाना चाहिए था, ताकि पता चलता कि क्या बात हो रही है। क्योंकि देखें, हमने ये भी देख लिया है कि जब तक आप मिलिटरीली स्ट्रांग ना हो, छोटे मोटे जो मलेशियाज होते हैं वो लॉन्ग टर्म कुछ सोल्यूशन डिटरमिन तो नहीं कर सकते। वो टेक्टिकल लेवल पे हालात को जो खराब होते हैं उनको तो चीजें वो शायद देख लेते हैं, या हालात खराब कर सकते हैं, या कोई छोटा मोटा अपना कंक्लूजन तो ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन वो नहीं निकाल सकते। सो लगता तो ये है कि, और फिर अगर हम देखें कि ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है, कतर ने भी जारी बात है इसकी सपोर्ट में आया, बाकी सारी की सारी अरब वर्ल्ड और मुस्लिम ममालिक जो है उसने खामोशी अडॉप्ट की है, और इजराइल को उन्होंने ऑक्यूपेशन फोर्सेस कहा है, लेकिन वो अब सारे के सारा अरब वर्ल्ड इस बात पे परेशान है कि ये ना हो कि वो हमास को क्रिटिसाइज करें तो सारी की सारी पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाए, या एक नई वेव ऑफ एक्सट्रीमिज्म मुस्लिम दुनिया में शुरू हो जाए। जुम्मों के खुतबों के बाद एक आपको पता है कि मुसलमान दुनिया इकट्ठी होती है, तो एक कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है ना अरब लीग के रेफरेंस पॉइंट से। अगर कायरो में सुनने में आया कि कोई इजलास होगा अरब लीग का, ना वहां से पता चल रहा है, ना जीसीसी से पता चल रहा है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो आपको पता है किसी काम की नहीं है, या ना यूएन जनरल असेंबली किसी काम की है। बिल्कुल ठीक है। जो आपने भी पॉइंट्स रेज किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए, मिस्टर नादर, व्हाट मिस्टर चीमा हैज रेज्ड जस्ट नाउ, एंड इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, एंड ही सेड दैट the attack by Hamas, first of all, is Hamas the true representation of the Palestinians? And then this attack on Israel, which has resulted in so far 700 Israelis being killed. In return, when the Israelis, through their airstrikes, they bombard the Palestinians, and thousands of Palestinians could actually be affected by that. So is this the right move, and where will this be leading us to? Brother, just to explain, the Israelis losses actually increased to become 800, not 700. Okay. Hamas, it is one of our political group, not representing the Palestinians. The only representative of Palestinian is PLO, our leadership. They are one of our political society, one of our honorable political groups. They are very active on the ground, and they are one of our freedom fighters. What happened in Gaza right now, it is not only Hamas is in war there. There is Al Jihad Islami. There is people from our other social groups are on the ground and the field, at hand by hand with freedom fighter of Hamas. So would you be Mr. Nader, would you be disassociating yourself with these attacks on Israel? Actually, brother, this is not attacks. This is reaction. Our brothers there, they named this attack as Aqsa flood. This attack was to protect Aqsa Masjid. That's why they make it Aqsa flood, because the Israelis daily, their settlers, their ministers attack Aqsa Masjid, and they are having a plan to change Aqsa Masjid from Masjid for Muslim Ummah to become a temple for the Jew, only for the Jew. They do that before in Ibrahimi Masjid
in Hebron in 1994. They control 70% of that masjid and changed it to become a Jewish temple. That right now they have the same plan for Aqsa Masjid. So when they are defending the most holy place for Muslim Ummah, this you can't say it is a kind of terror. This is they are defend themselves. Defends the Qibla Awal of Muslim Ummah. Like the international society and Western countries say that Israel have the right to defend itself, the Palestinian people have the right to defend themselves. This right is equal for each party in the world, for all the nation. This is not selecting only for Israelis. Israel is only a criminal, came from nowhere in Europe and other from Africa, and they built their own state on stolen land, which is Palestinian homeland. It's how the victim become a criminal when the criminal become a victim. Israelis are a criminal, our apartheid system are Nazi, so they are paying the price of their criminal action right now, and they need to be patient for what is happening, because this is are paying the price of their criminal action since 1948 until now. Right, Mr. Nader, another point that I would like to, another question I would like to ask you over here is that yes, please go ahead. Not an action. Right, Mr. Nader, another question that I wanted to ask you before we go for a short break is that has Qatar tried to intervene into the matter of hostages? Actually, our Palestinian freedom fighter mentioned that they have many Israelis prisoners between their hands. They actually, most of that prisoners are settlers and Israelis army soldiers. They take it when they was in battle inside outside the border of Gaza. Until now, there is no specific number, but the Israeli stats said about more than 300 prisoners are between the freedom fighter hands. Okay, but has Qatar tried to make an effort between Israel and Hamas to free those hostages, whether they are with the Israelis or whether they are with Hamas? We have 7,500 Palestinian prisoners inside the Israeli jails. The only crime they make that they are freedom fighters, defend their people and try to make their homeland free and support the establishing of independent state of Palestine. This is the only crime they do. So we have 7,500 Palestinian prisoners, include women, children, and men, are still in Israeli prison. So maybe later on, our freedom fighters try to exchange the prisoners between their hands with the Palestinian prisoners in the Israelis' hands. I like to mention one thing actually. Just a few, before 30 minutes, the Israelis attacked one of the Palestinian market in Gaza Strip, in the north of Gaza, in Jabalia. In that attack, they killed more than 50 Palestinian innocent people, civilian people, and we don't know how much going to be the injured people in that attack. They attack only civilians, attack innocent people, only to make a huge number of shaheed between the Palestinians to show themselves proud among their people when they are losing 800 killed by the freedom fighters. Right. Mr. Nader, we've got to take a short break over here. We'll be coming back after the break and we'll be discussing the ongoing situation in Gaza further. नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा वापस मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं वो शामदीद आज के प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। कमर चीमा साहब, आपने अभी नादिर साहब की गुफ्तगू सुनी और जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उससे भी बखूबी आगाह हैं। क्या आपको लगता है कि सिचुएशन जाकर आगे डिफ्यूज़ होगी? जब इंटरनेशनली या OIC से तो हम कोई इतनी ख़ास उम्मीदें नहीं लगाए बैठे हुए या अक़वाम मुत्तहिदा से कोई ख़ास उम्मीदें लगाए हुए नहीं बैठे हुए, लेकिन क्या सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी या मामला एस्केलेट होता जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इजराइल जितना बर्बरिक और गैर इंसानी सलूक करने वाले और इंटरनेशनल लॉ की जो धज्जियां उखाड़ने वाला मुल्क है,
लेकिन कभी दुनिया में उनको जो है वो कंडेम नहीं किया जाता। हर दफा फलस्तीनियों को ही कहा जाता है कि आप रिएक्शन क्यों देते हैं, ये एक जुल्म की बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की एस्केलेशन की, मुझे लगता है ये है कि आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बड़ी सीरियस रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान जो है उसने बेरूत में पिछले हफ्ते इस ऑपरेशन की अप्रूवल दी है। अगर तो ये बात ठीक है तो हो सकता है कि इजराइल जो है वो ईरान पे कोई हमला करे। अगर इजराइल ईरान पे कोई हमला करता है तो ये एस्केलेशन है, फिर हिजबुल्ला भी बीच में आएगी, फिर हमास भी आएगी। और हिजबुल्ला के बारे में तो अभी से भी इतलात हैं कमर चीमा साहब कि वो अभी से उनकी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए वो थोड़े पैमाने पे कार्रवाई है, हल्की फुल्की, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर, लेबनान के बॉर्डर के ऊपर कोई मसले हुए, लेकिन हिजबुल्ला एक बड़ी मजबूत किस्म का आपको पता है ग्रुप है और वो उनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। तो ये जो चीज है कि ये एस्केलेट हो सकता है। अब इसमें अगर बड़ी ताकतों जो हैं उनका बिहेवियर ये है, अमेरिका ये चाहता है कि वो अपना एक बेड़ा जो है मेडिटेरेनियन सी में भेज देंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेस्टर्न मीडिया सारा दबाएगा फलस्तीनियों को। अभी मैं देख रहा था कि फलस्तीन के एम्बेसडर पूरी दुनिया में जाके ये कह रहे हैं कि हमें तो ये कहा जाता है कि तुम कंडेम करो जो हमास ने किया है, पर जो इजराइल करता है कभी क्या उनको किसी ने कहा है कि आप उनको कंडेम करते हैं? उनको कोई कंडेम नहीं करता। तो ये देखें, ये इजराइल एक ऑपरेसर है जिसने एक हमास को एक खुली जेल में डाला, पूरी गजा के लोगों को खुली जेल में डाला हुआ है। मुझे लगता है ये एस्केलेट करेगा क्योंकि जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है ये एक फार राइट रिलीजियसली मोटिवेटेड गवर्नमेंट है जी। उनकी जो जमात के बाकी दो जमातें, मेन दो जमातें जो उनके इत्तेहादी हैं, वो मजहबी जमातें हैं और वो उनकी मदद से उन्होंने हुकूमत बनाई है। और लगता ये है कि वो एक मजीद क्राइसिस पैदा कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से, दुनिया की तरफ से मदद उनको पहले ही मिलने वाली है। और नेतन्याहू जिन्होंने बड़ी देर हुकूमत की लेकिन बीच में उनको हटा दिया गया था, एक और यूनिटी गवर्नमेंट आ गई थी। लगता यह है कि उन्होंने अपनी फौज को और अपने इदारों को काफी पोलिटिसाइज किया हुआ है। तो उन्होंने अपनी अपोजिशन जमातों को भी कहा है कि हमारे साथ हुकूमत का कोलिशन ज्वाइन करें ताकि हम हमास के खिलाफ जंग कर सकें। सो इट मीन्स कि ये जो नेतन्याहू की प्लानिंग है विद इंटरनेशनल सपोर्ट, ये तो लंबी चौड़ी प्लानिंग है। अगर ये जंग लंबी होती है तो जारी बात है, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि गजा के लोगों को क्या बनेगा, उनको ना इजिप्ट उस तरह सप्लाई लाइन देता है, ना इंटरनेशनल पानियों से उनको कोई एक्सेस मिलेगी, ना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलेगी। तो ये एक जिसे आप कहते हो, और फिर आपको हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, एक एक फैमिली के 20-20 लोगों की जानें चली गई हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें अरब लीग को इमीडिएटली एंटर होना चाहिए। कतर के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिकन के, यूएई के, इन सब ने अमेरिका के साथ नॉर्मलाइजेशन की हुई है, तालिबान के हवाले से बड़ी सपोर्ट की हुई है। यूएई को अपना रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि यूएई इटसेल्फ वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो उनका कुछ फायदा होना चाहिए इस वक्त जब उन्होंने आज से 2-3 साल पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो उनको क्या लिवरेज इजराइल देता है रिकॉग्नाइज करने की? अगर उनको कोई लिवरेज नहीं दी जाती तो फिर इस पे जारी बात है मुस्लिम वर्ल्ड को सोचना होगा। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होंगे, एक्सट्रीमिज्म के वाकयात पूरी दुनिया में हो सकते हैं और दाएं बाजू के मजहबी ग्रुप जो हैं वो हो सकता है मजीद हमले भी करें। इस एंगल को भी समझा जाना चाहिए। Right. Mr. Nader, we've just got this news which is coming in that Saudi Arabia has called off its dialogue efforts with Israel to resume the relations. So they've actually called off. How do you see this developing? Actually, brother, Israel tried to normalize its relationship with all the world, looking for peace and stability. But the right address to peace and stability in the region is the Palestinian people, Palestinian leadership. This is the only right address. Israel's sake for getting relationship with all the world. On the other hand, she don't deal with the Palestinian people as equal to them. The only address to getting peace and stability in the region is the Palestinian. No other address to getting that. So, if they are missed the road, they need to understand that what they are facing right now is a price of their policy. This is the first thing. The message for the international
society and for European countries, Americans who are supporting blindly Israel. We get from United Nations more than 800 resolutions in favor of Palestine. We get from the Security Council of United Nations more than 90 resolutions in favor of Palestine. The international society, the Americans, the European countries who are supporting blindly Israel don't have the power to make Israel follow and obey this resolution. So please, if you are not can't make just and justice and stability in the region by following the international law, by following the international resolution, don't be in the wrong place of history by supporting the criminal against the victim. We are the victim here. The Israelis are the criminal. We are the people who are suffering from the occupation since 1948 until now, not the Israelis. You bring Israelis from your own country to end your problem, internal problem, by creating a problem for the Palestinian. You are responsible of the crisis in our region. You need to solve it. You need to take the power to make Israel accept and obey the international law and international resolution. Right. Qamar Cheema साहब, अभी नादिर साहब ने जो बात की उसको आगे बढ़ाते हुए आयरन डोम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका बड़ा चर्चा था कि जी इजराइलीज़ के पास आयरन डोम है और जैसे अगर कोई रॉकेट्स फायर किए जाते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। फिर सैटेलाइट्स भी इजराइल के पास हैं, इंटेलिजेंस इजराइल की उसका भी बड़ा चर्चा पूरी दुनिया में बात होती है जी इजरायली इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं है। इस सब के होते हुए ये सब कहाँ गए और ये हमला हो गया और पता भी नहीं चला? कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं चली जा रही है इजराइल की तरफ से? देखिए, ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि लोग, जारी बात है ये कि इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा। आपने बात की गेम की कि इट मींस कि उन्होंने हमास को फ्रीडम दी हो इस तरह की चीज़ें ऑपरेट करने की और बाद में फिर इसको एक्सक्यूज़ बना के जो है इन्हीं को मारा जाए, ये इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन लार्जली मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन कुछ दिन पहले इजराइल की जो किसी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट चल रही थी कि हमास जो है अब इस काबिल नहीं है कि वो इजराइल पे हमला कर सके, क्योंकि बहुत सारे जो गजा के लोग हैं वो इजराइल जाते हैं जॉब्स करने, नौकरियां करने, तो वो बड़े डिपेंडेंट हो चुके हैं इजराइल के ऊपर। तो ये इस फैक्टर को भी जो है वो मद्देनजर रखा जा रहा था कि शायद अब हमास की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमास है ये एक नजरियाती ग्रुप है, ईरान की इनको बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की सपोर्ट हासिल है, तो ये बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। और जारी बात है, कहा जाता है कि किसी भी ऑपरेशन में जो सीक्रेसी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो जिस तरह आप देखें लैंड, एयर और सी से उन्होंने हमले किए हैं फलस्तीन इजराइल के ऊपर, इट सीम्स के जो इजरायली हैं उनको समझ नहीं आई और ये वाकई एक बड़ा तरबियत याफ्ता लोग थे जिन्होंने काफ़ी तरबियत ली हुई थी और जिन्होंने काफ़ी बंदे जो हैं मारे हैं। अगर मैं लेकिन ये समझ में आता है कमर चीमा साहब कि आयरन डोम ना चले, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके फेलियर के इम्कानात बड़े कम हैं कि वहाँ से रॉकेट्स फायर हो रहे हैं और वो ना चले। देखिए, ये हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। S-400 इवन के रशिया का बड़ा मजबूत डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल, वो भी यूक्रेन के मामले में कई दफ़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। कई दफ़ा आयरन डोम की बैटरीज के हवाले से मसले आए हैं, कई दफ़ा कि उनकी बैटरीज प्रॉपर ना काम करने की वजह से ये हुआ है। सो उनके पास, इजराइल के पास उनकी इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा है, वो पूरी दुनिया में ऑपरेट भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस चीज़ में आके वो मार खा गए हैं, ओवर एस्टिमेट कर गए हैं अपने आप को और अंडर एस्टिमेट किया हमास को और अंडर एस्टिमेट किया कि जो गजा के लोगों की जो डिपेंडेंस है इजराइल के ऊपर बड़ी बढ़ चुकी है। सो ये अपनी जगह पे मौजूद है। हमेशा इस तरह की इंटेलिजेंस फेलियर्स हो जाते हैं, 9/11 भी हमने देखा है, लंदन बॉम्बिंग भी देखी है, बड़ी दुनिया में इस तरह के मसले हो जाते हैं। लेकिन लार्जली ये देखना ये है कि अगर ये हमास ने ये किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हो सकते हैं फलस्तीन के लिए। एक बात आपने अभी बताया कि सऊदी अरब पीछे हट गया है, क्या इसके ये तो जारी बात है, एक समझे कि हमास की एक इंटरनल विक्ट्री है कि मुस्लिम वर्ल्ड ही पीछे हट जाए, क्योंकि सऊदी अरब इस चीज को समझता है कि अगर हमने नॉर्मलाइजेशन की तो ये सारी की सारी पब्लिक ओपिनियन मुस्लिम वर्ल्ड में हमारे खिलाफ हो जाएगी। और मैंने आपको जैसे बताया कि
ये जो वाक़यात हैं ज़रूरी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान आज TTP के हाथों जो है वो दहशतगर्दी फेस कर रहा है, इस तरह मुस्लिम दुनिया के अंदर मुसलमान ही मुसलमान रियासतों पे हमला कर सकते हैं, ये कहते हुए कि ये सारे पपेट हैं वेस्ट के। आपको पता है इस तरह की चीज़ें हैं, अलकायदा दाइश पहले ये काम कर रही है। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड और केयरफुल होके ये करना पड़ेगा। लगता तो ये है कि हमास टैक्टिकली कामयाब हुई है, जिसे हम एक लफ्ज़ बोलते हैं शॉक एंड ऑ कैंपेन। ये अमेरिकन अफगानिस्तान में किया करते थे कि शॉक कर देते थे, उन्होंने दुनिया को भी शॉक किया है, इजराइल को भी शॉक किया है, सऊदीज को पीछे कर दिया है। तो इजराइल के अंदर पैनिक फैला दी है, इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है मेडिटेरेनियन सीन के अंदर। सो फॉर अ मोमेंट तो ये लग रहा है कि सारी दुनिया जो टैक्टिकली तो हमास कामयाब नजर आ रही है, स्ट्रेटेजिकली एंड लॉन्ग टर्म इसकी क्या इम्प्लीकेशंस मिडिल ईस्ट में हो सकते हैं और वो देखने को है। मुझे लगता है कि वो इम्प्लीकेशंस भी कुछ ज्यादा अच्छे और इनकरेजिंग नजर नहीं आते। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं जी। मिस्टर नादर, वी हैव गॉट टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए जी। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मिस्टर नादर, कमिंग टू यू इन द लास्ट पार्ट ऑफ द शो, Mr. Cheema was just talking about the consequences of this move by Hamas. As you've said, there's obviously the Palestinian government do not associate or disassociate yourself with them, but you are in a way in favor, or you actually endorse the attack or the move, you may say, by Hamas. So the consequences, have they been kept in mind? Because when the reaction is going to come from the other side, a lot of people in Gaza, in the Gaza Strip, they're going to be affected. And this bombardment which has been done, and out of which one was just quoted by you as well, that about half an hour ago there was an attack by the Israelis, an air attack. So are you like, have you thought about the consequences? Where will this actually be heading to? We are optimistic. First of all, this is not the first battle between Palestinians and the Israelis. They faced us before in Karama in Jordan with our brothers Jordanian army in 1968 in Karama, and they lose a lot of by Israelis army killed and injured. They face us again, our freedom fighters in Beirut in Lebanon 1982. And they have a huge loss by killing a lot of Israeli soldiers and many of them injured. So the only things we are looking for is freedom of our homeland. We are looking for stability. We are a lover of peace and stability in our homeland and in the region. If the Israelis not support that, they are need to think about the price what they need to pay for their policy. For us, we are freedom fighters, looking for establishing our independent state with Jerusalem as its capital. Whatever the price, we are ready to pay for this battle, for this, for getting independent, getting freedom. We are ready to pay any price we need to pay. We are ready. But I don't know if the Israelis ready to pay the price of occupation, of apartheid, of their criminal action against the Palestinian people. This is the first things. Really, brother, I'm really surprised that you're speaking about Israel as a very, well technology, and they have the technology. If you are reading a little bit about the stage around Gaza, it is electronic stage. It is one of the most modern stage in the world. When anyone touch it, it is directly giving alarm to their operation room, and directly automatic fire machines killed the person in his place. With that, Palestinian freedom fighter can cross this stage and enter to Israelis and attack more than 11 Israelis army camps, more than 30 Israeli settlements in that area, without getting anyone to fight them in the first moment. So how we speak about, and Israelis have many satellites in the sky. That's exactly what we were discussing, Mr. Nader. I was asking Mr. Cheema that they've got all the technology, they've got the satellite, they've got the intelligence, and technologies like Iron Dome and all of that actually didn't work. That's what we were discussing.
this didn't work because the courage of the Palestinian fighters, freedom fighters, are going to be stronger than any technology in the world. This is what the lesson needs the Israelis know. Please do also highlight the immediate support which is needed there in Gaza. What immediate support is needed? Is there any immediate support which is needed? Because obviously the medicines, the food supplies, as you said, that there's just a few more days that they'll be able to survive with the supplies being cut off. Negotiation with Israelis to allow them to send supply for the Palestinians there. The Israelis until now didn't allow that. As you know, all our country under occupation, controlled by Israelis. So if there are any shipment came to Gaza without authorized by Israel, they're going to attack it. So our Egyptian brothers and sisters, the Egyptian government, president start negotiation with Israel to facilitate human supply for Gaza people. Until now, the Israelis not allowed it. We hope so in the coming few hours or for coming days they allow that. This is the first thing. Second things, again and again, brother, the only solution is by end the occupation, by end the apartheid system of Israel, by establishing a Palestinian independent state with Jerusalem as its capital. This is the only key for peace and stability in the region. Any other ways not going to take us again and again for more conflict, more wars, more clashes. Exactly. And going to keep us always in the blood circle and the blood of violence, and the circle of violence. Right. चीमा साहब, आखिर में ये जो दुनिया में इसका एक पूरा नक्शा पेश किया जा रहा है, लग यूँ रहा है कि जिस तरह एक कहानी गढ़ी जा रही है और जहन साजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी ये इस्लामिक टेररिस्ट थे कि जिन्होंने ये हमला किया, दुनिया में ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है. So, Mr. Nader, I'm just telling Mr. Cheema over here so that you may also understand that I'm telling him that the world, the perception which is being built, it's been said that as if they are Islamic terrorists who have attacked Israel. So, Cheema साहब, इसका क्या आपको आगे रद्द अमल कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा एक कहानी गढ़ के और अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा और कुछ और भी मगरबी ममालिक इन्वॉल्व होंगे और होकर वो जिस तरह अमेरिका में कहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा भी है कि जी ख़त्म कर दो, सब उड़ा दो. देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, भारत और इसराइल का आप देखें कि उन्होंने कब्जे भी किए हैं, उन लोगों के ऊपर उनकी ज़मीनें भी खाई हैं, उनके लोगों को मारा भी है और साथ में साथ उनको दहशतगर्द भी कह रहे हैं. यानी कि फ्रीडम फाइटर जो बंदा जिसके ज़मीन पे कब्जा हुआ है और अपने हक के लिए लड़ रहा है, उन्हीं को दहशतगर्द करार दे दिया गया है. ये है इंटरनेशनल लॉ दुनिया का. इसीलिए तो कहा जाता है, और इसमें जारी बात है मुसलमान दुनिया की कमजोरी है. आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मुसलमान दुनिया खामोश है. इसीलिए जब फलस्तीन में जो कुछ होता है तो बाकी नॉन अरब दुनिया खामोश है कि ठीक है, ये कौन सा हमारी सुनते हैं. सो मेरा ख्याल ये है कि इसी के डिवाइड एंड रूल का फायदा किया है सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ने और उन्होंने हमें जो है वो नुकसान पहुंचाया है. और मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया है कि ये जिन इलाकों पे कब्जा हुआ है उनकी जो जायज स्ट्रगल है उसको रिकग्नाइज किया जाए, ना कि उनको उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया जाए कि ये दहशतगर्द लोग हैं. और मेरा ख्याल है कि इसमें जो मेन स्ट्रीम मुसलमान मुल्क हैं उनका मेजर कसूर है, क्योंकि उन्होंने कंसेशंस बहुत सारी ली हैं दुनिया के मेन स्ट्रीम मुल्कों से और इन रिटर्न मुसलमान दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है. आज मुसलमान दुनिया, आज देखे भारत मुसलमानों को दहशतगर्द करार देता है, वो कहता है जी ये दहशतगर्द है. तो ये वो चीजें हैं. फिर इस्लामोफोबिया बहुत कुछ है. मैं समझता हूँ ये हमारी इंटरनल कमजोरियां हैं. हम अपनी स्ट्रगल को पूरी तरह इंटरनेशनली फ्रेम नहीं कर सके, हम अपने इश्यूज को पूरी दुनिया में उजागर नहीं कर सके और फिर कई दफा मुसलमान ममालिक ने भी अपने कॉन्फ्लिक्ट का नाजायज फायदा उठाया है, जिसको फिर बाकी दुनिया ने जो है वो फायदा उठाया और अपने लोगों से भी हम एक दूसरे से फायदा उठाते रहे हैं. सो हमने एक जायज स्ट्रगल को जायज नहीं रहने दिया, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, जिसका नुकसान हो. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपका, एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर नादिर Alturk for coming on the show tonight and briefing us about the ongoing situation in Gaza and explaining how the courage of the freedom fighters have penetrated through systems like the Iron Dome and the world-renowned intelligence and the satellites
all the technology which Israel has had, they've actually failed in this. इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।